Hello everyone, today we will start exercise 4D. Topic of the exercise is area of triangle using determinants. Find the area of triangle using determinant. Using determinants. So firstly, here the area of triangle, formula of area of triangle is 1 by 2 determinant x1 y1, x2 y2, x3 y3. This is 1 1 1. This is your formula of area of triangle. When we have to find area of triangle using determinants, then we have to apply this. So let us start question number first. Find the area of triangle using determinants if the vertices are 1 0, 6 0 and 4 3. Let us take, this is your x1 y1, this is your x2 y2 and this is your x3 y3. So apply the formula. Area of triangle is equals to 1 by 2 determinant x1 y1 is 1 0, x2 y2 6 0, x3 y3 4 3, and last column we will have to take 1 1 1 every time. Now let's start. To find the determinant, I expand along R1 plus minus plus. So 1, other matrices is 0 1 3 1, minus 0 is this row and this column left 6 4 1 1 plus 1 6 0 4 3. So 1 by 2 as it is, 1 as it is, determinant solve. 0 into 1 is 0, minus 3 into 1 is 3, minus 0 as it is, 6 into 1 is 6, minus 4 into 1 is 4, plus 1, 6 into 3 is 18, minus 0. So 1 by 2 as it is, 0 minus 3 is minus 3, ब्रैकेट के बाहर 0 है, so सारी ब्रैकेट तो डिको 0 होगी, प्लस 1 into 18 is 18. This is 15 upon 2 or you can say 7.5 square units. Square units जरूर पाना है जी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है और एरिया हमेशा कादे च हुंदा है, एरिया दा यूनिट की हुंदा है हमेशा स्क्वायर. सो लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल and check the points are collinear or not. कोई भी when 3 points are collinear, देखो बच्चे कंडीशन की है collinear दी. If 3 points are collinear and their determinant is, then their then the area of triangle will be 0. की कंडीशन है बच्चे, जो तुहानू क्या है फाइंड करो द पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है. ठीक है जी, तुसी चेक द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो 3 पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्राइंगल चेक करोगे. इफ द एरिया विल बी 0, जे 0 आ जाता है दैन यू कैन से पॉइंट्स आर कोलिनियर. गिवन है कोलिनियर दैन एरिया विल बी 0, एरिया नू 0 तुसी लैके चलोगे. ठीक है जी, ये नाल दे क्वेश्चन देखो. एक नैक्सट क्वेश्चन नंबर सेकंड, 0 0 6 0 एंड 4 3. चेक द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. चेक दीज पॉइंट्स आर collinear or not. So firstly we will have to find area of triangle.
area of triangle is equals to 1 by 2 determinant 0 0 6 0 4 3 1 1 1 and 1 by 2 as it is plus minus plus, so 0. First element we will take 0 and this row and this column left 0 1 3 1 minus 0, this row and this column left 6 4 1 1 plus 1 6 0 4 3. सो 1 by 2 एज इट इज़ ब्रैकेट के बाहर 0 है बच्चे, अंदर भी 0 ही बन गया थोड़े को माइनस 0 सेम एज इट इज़ 6 minus 4 plus 1 6 3s are 18 minus 0. This is also 0 and this is also 0. So 1 by 2 into 18 9 square units. देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल नॉट बी 0. एरिया ऑफ ट्राइंगल थोड़े को 0 नहीं आया, देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. द पॉइंट्स आर not collinear. When the area will be 0, the points are collinear. Next type questions दी देखो बच्चे, if these 3 points are collinear then find the value of x. देखो points तो collinear given है, so area of triangle is equals to 0 लेके चलांगे. Then apply the formula 1 by 2 of determinant. The determinant is 3 minus 2 x 2 8 8 and last column is 1 1 1 is equals to 0. So this is 1 by 2 plus minus plus. Firstly 3 will be positive and other determinant is 2 1 1 8 minus minus plus 2 and other determinant is x 8 1 1 plus 1 x 2 8 8 is equals to 0. So 1 by 2 same as it is, 3 as it is, this into this, 8 into 2 is 16 minus 1 plus 2 x minus 8 plus 1 8x minus 16 is equals to 0. So 1 by 2 as it is, 3 as it is, 16 minus 1 is 15. 2 into 8, sorry, last column is 1 1 1. So 2 minus 1 is 1. 2 8, here is 8, so 2 minus 8 is minus 6 plus 2 2x minus 16 plus 8x minus 16 is equals to 0. So here this is 1 by 2 as it is, minus 6 into 3 is minus 18 plus 2x plus 8x is 16x minus 16 minus 16 is minus 32 is equals to 0. Two x plus 8x is 10x. So 10x minus 18 minus minus plus, so 18 minus 18 minus 32 is minus 40 minus 50 is equals to 0. These 1 by 2 multiply to this side and 10x minus 50 is equals to 0 and 10x is equals to 50, so x is equals to 5. This is your answer. Next question is 8th important है question बच्चे. Find the equation of line. Find the equation of line where the coordinates are 1 2 and 3 6. Let first point be
एक्स वाई। देखो हमेशा जो तुम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है या अंडरस्टूड है भी वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई होंगी है लाइन की इक्वेशन। सो फर्स्ट पॉइंट मैं लेट कर लिया भी वो एक्स वाई है। दैन अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइएंगल 1/2 इंटू एक्स वाई 1 2 3 6 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 1/2 एज इट इज़ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्स एज इट इज़ बार थोड़े को आ गया। सो 2 1 6 1 माइनस वाई 1 3 1 1 प्लस 1 सो 1 3 2 6 is equals to 0। so here we have 1/2 as it is, x as it is 2 minus 6 minus y 1 minus 3 plus 1 1 into 6 is 6 minus 6 1/2 साइड जाके 0 हो गया। तो को की बचिया देखो x इंटू -4 x माइनस वाई इंटू -2 सो माइनस माइनस प्लस 2y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज -4x plus 2y is equals to 0, or you can say taking common -2 and this is 2x minus y is equals to 0, -2 goes to that side and it will be 0 minus 2x minus y is equals to 0. That is required equation of line, equation of line। सेवंथ क्वेश्चन एक तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स इज x4 and 0x and -1 3 if the area is 4 into 1/2 स्केयर यूनिट। देखो ये अगे तुहाडे कोल की सी इस टाइप का क्वेश्चन किया बच्चे आप कोलीनियर वाला कोलीनियर तुहानू पॉइंट्स गिवन सी एंड तुसी की फाइंड करना सी एक्स किसी कॉन्सटेंट की वैल्यू फाइंड करनी सी। ये तुहानू एरिया ही गिवन है। सो लेट अस स्टार्ट 1/2 x4 0 8 -1 3 1 1 1 इज इक्वल्स टू 4 into 1 2 4 into 1/2 is 9/2। so 1/2 as it is starting plus minus plus x as it is and determinant is 8 1 3 1 minus 4 this is 0 minus 1 1 1 plus 1 0 8 minus 1 3 is equals to 9/2। so 1/2 as it is, x as it is, solving this so 8 into 1 is 8 minus 3 into 1 is 3 minus 4 as it is 0 into 1 is 0 minus minus plus 1 into 1 is 1 plus 1 0 minus minus plus 8 is equals to 9/2। so this is cancel out and left we have 8 minus 3 is 5x minus 4 plus 1 is minus 4 plus 8 is equals to 9। so 5x plus 4 is equals to 9 5x is equals to 9 plus 4 9 minus 4 is 5 so x is equals to 1। exercise complete। thank you students।